Yeah, good morning, friends. Welcome to the session. Harpreet, good morning. Everybody, Om Prakash ji, seeing you after a long time. Venkat, Jerry are all regular now. Yes. So they see currently आपको जो है ना वो gaps पे ध्यान देना पड़ेगा. Yesterday also see you had a gap down opening, but market did not break the first 15 minutes low. And range bound रहा, no doubt about it, but ultimately it did not crack. So ये जो मार्केट है वो गैप थ्योरी के आसपास इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए रिवॉल्व कर रहा है एंड यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. हेलो आरिफ, गुड मॉर्निंग डेटी ट्रेडर. या मिस्टर प्रहलाद, आई थिंक आई डोंट नो योर नेम. इज इट ओके? या उर्मिला, ग्रेट टू सी यू. हाउ वाज योर डे यस्टरडे? कैसा था उर्मिला कल का दिन? गुड, बैड, अगली? Arvind is there. Okay, great. So we have all our regular traders out there. So let's start. Urmila, Kelka din good. Okay, Urmila says it was good. So I'll just read out the disclaimer. This is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. So let's start. We follow our process. Let's go to the headlines. क्या बोल रहे हैं आज की तारीख में? देखिए, हमारे मार्केट में जो अंडर परफॉर्मेंस है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट्स इज वेरी वेरी दिस थिंग बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है. इससे क्या हो रहा है, मार्केट डिप डाउन हो रहा है तो वहां से एक इंट्राडे बाउंस आ रहा है, बट इट्स नॉट टेकिंग अ शेप ऑफ अ स्विंग अप और रैली. एफआईज आर कंटिन्यूअसली सेलिंग, वो एक प्रेशर है मार्केट में, बट समहाउ at a current stage looks we are strongly decoupled from what's happening in US and globally. So headline says Asia stocks pressured by tech losses, Nikkei Kopsi slide on chip losses. तो टेक्नोलॉजी में कुछ नेगेटिव न्यूज चल रहा है. That's all we can make out. US futures more or less flat है. Bovespa is down, Nikkei is down 1000 points, close to 1%. So एशिया में कट है. और दूसरा देखिए, आपको आज जो ध्यान रखना है, मैं जनरली मनी कंट्रोल चेक नहीं करता हूँ बिकॉज व्हेन आई एम ट्रेडिंग आई एम विद चार्ट्स. मुझे माइक्रो न्यूज नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एवरी मोमेंट व्हाट्स हैपनिंग फ्लैशेस एंड ऑल. सो द की हियर इज RBI monetary policy will come out at 10 o'clock. So this is the key event for the market. आज आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो, मार्केट को देख रहे हो, it has to in context with the RBI policy announcement. Sorry, I have not shared my screen. Oh, I'm so sorry. Yeah, I'll just share it. So yeah, now I've shared my screen. So I have to read out the disclaimer once more. So this is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. So now is the screen visible to you all? Yeah, I've shared my screen. Yeah, give me either a yes or a no, friends. Is the screen shared now? Are you able to see my screen? I want yes from somebody. Okay. सो आज जो है आरबीआई मॉनेटरी की पॉलिसी के इर्द गिर्द ही मार्केट घूमेगा. एक्सपेक्टेशन क्या है वो देखते हैं. देखिए, पॉलिसी में आपको देखना आरबीआई दे क्या रहा है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है, और उसके बाद टेक्निकल लेवल्स में मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है. दीज आर द थ्री थिंग्स. डोमेस्टिक सपोर्ट कर रहा है, एफआईज बेच रहा है, नेट सेलर्स. सो ये कंटिन्यू है. गीता गोपीनाथ जो कि आईएम की एमडी थी एक बार, वो क्या बोल रही है, बड़े लोगों को एक बार राय ले लेते आज आरबीआई की मीट के बारे में. फॉर्मर आईएमएफ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ सेड आरबीआई इज बैलेंसिंग इन्फ्लेशन रिस्क फ्रॉम हायर ऑयल प्राइसेस, करेंसी डेप्रिसिएशन अगेन sign of softer economic activity. Speaking to Gopisa says likely to remain on hold in the near term. She said RBI is expected to continue with a data-dependent approach before taking any future policy action.
सो आज जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का वो क्या है कि आरबीआई ना रेट घटाएगा ना बढ़ाएगा, स्टेटस को मेंटेन करेगा. सो दैट्स व्हाट द मार्केट एक्सपेक्टेशन इज. मार्केट वो हिसाब से देख रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से. Yeah, that's what Madhu market is expecting. But we follow our plan, we don't deviate. So first, as always, we'll start with first crude का चेक कर लेते. देखते 94 के ऊपर गया कि नहीं गया अभी तक. No, crude as we have seen it's around 94. तो 94 का ये जो रेजिस्टेंस है क्रूड में काफी स्ट्रांग है. ये निकलता है तो फिर देर इज अ possibility of spiking up to 100, but right now we are not considering that. अभी हम $94 का क्रूड लेके ही चल रहे हैं और नीचे में है 88. लेट्स सी विच साइड क्रूड कम्स फर्स्ट. सो क्रूड मोर और लेस इन चेक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड नहीं है क्रूड्स में. बट एट द सेम टाइम देखिए क्रूड रेंज बाउंड हो गया. मार्केट के लिए चाहिए क्रूड डिक्लाइनिंग, वो अभी हो नहीं रहा. जियोपॉलिटिकल रिस्क इंटैक्ट है. सो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट स्विंग देख लेते क्रूड का कि ऐसा नहीं हो कि ब्रेकआउट हो गया हमें पता नहीं. So we should anticipate it will have a negative impact on the market. That's the reason we are watching crude daily. देखिए आज मैं SGX Nifty नहीं देखूंगा, it's meaningless because the main price action in our market will only be post 10. So no point in seeing what's happening in GIFT Nifty. VIX देखना जरूरी है. VIX will go and watch. So if I go to indices, I type here India VIX. So India VIX अगर आप देखो तो एक रेंज में खड़ा है. कितने दिन का रेंज है? जस्ट मार्क दिस. 1 2 3 4 5 6 6 दिन के रेंज में इंडिया विक्स जो खड़ा है वो ये रेंज में ही खड़ा है. नाउ I'll just thicken those lines so it's very clear to everybody. सो इंडिया विक्स इज इन अ रेंज. देखते हैं पहले अहेड ऑफ इवेंट रेंज मींस आज रेंज टूटने वाला है. देखिए इंडिया विक्स का एक पैटर्न बन रहा. यहाँ पे भी एक रेंज में ही था इंडिया विक्स, बट हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते. विल हैव टू वेट विच साइड इंडिया विक्स इज ब्रेकिंग. दैट्स हाउ. क्या वॉलेटिलिटी एक बार खुलती है फिर शांत हो जाती है, फिर देखते हैं वॉलेटिलिटी में डिक्लाइन आ रही है कि एक अपसाइड आ रहा है. सो दैट इज हाउ टिपिकली इंडिया विक्स ट्रेड्स. ये स्टॉक की तरह मूव्स नहीं. चार्ट तो काफी स्मूथ है. यहाँ पे भी रेंज है, यहाँ पे भी रेंज है. व्हाई आई एम seeing this because ये जो माहौल बना रहा वो लो वॉलेटिलिटी का बना रहा. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी. So all the ranges in the India VIX previously have broken on the downside because ये एक declining है, volatility cool off कर रहा. इसके पहले सारी range had broken on the upside, but we can't anticipate कि range नीचे ही टूटेगा ऊपर ही टूटेगा. Let it break off the either side. Everybody clear about it? My screen is buffering. Pushpendra says, everybody, my screen is okay. I don't know what's happening. Let me check on my mobile. My mobile is not there. So now is it okay, everybody? Is everything fine? There's no buffering. Okay here. Everybody says okay. So I guess somebody you must be having some net issue, Pushpendra. So ये हमने विक्स देख लिया, एक रेंज में है. देखते कौन सा साइड विक्स टूटेगा. और विक्स अगर आप रेंज देखो ना तो ये 3 से 4 5 दिन का ही रेंज रहता है. यहाँ पे भी अगर आप नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो ना फ्रॉम दिस टू दिस तो 8 बार का रेंज है. अभी का जो रेंज है आई थिंक 5 बार तो हो गया, 6 हो गया, 7 8. सो विक्स अभी एक स्पाइक की तरफ जा रहा है. इफ इट गोज डाउन इज गुड फॉर द मार्केट, इफ इट गोज अप इज बैड फॉर द मार्केट्स. तो विक्स पे मोर और लेस रेंज है. और क्वाइट ऑब्वियस है. देखिए कोई बड़ा इवेंट आता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है रोज रोज नहीं आती, 3 महीने में एक बार आती है. तो उसके लिए ट्रेडर्स will be on a cautious note. Will traders बोलो, investors बोलो, short term momentum investors बोलो, everything will like to read the final points before committing. तो quite obvious है कि एक रेंज में मार्केट को
इवेंट लाके खड़ा कर देता, बिकॉज इवेंट का किसी को पता नहीं है क्या होने वाला। 10 o'clock it will be very very clear. After this mindset we are very very clear, crude 94 होल्ड कर रहा है, तो वहां से कोई स्पाइक नहीं है कि नेगेटिविटी क्रूड से नहीं आ रही है, सम प्रेशर। विक्स जो है रेंज में है, तो हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते रेंज कौन सी साइड टूटेगा। जो साइड विक्स की रेंज टूटेगी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन निफ्टी लेगा। व्हाई? बिकॉज विक्स एंड निफ्टी आर इनवर्सली रिलेटेड। After doing this only, then we go to Nifty. So this is Nifty index. और निफ्टी भी देखिए विक्स की तरह, अगर विक्स रेंज में है तो मार्केट ने भी यहाँ पे गैप तो भर दिया, एक रेंज बना लिया मार्केट। आज मैं ज्यादा माइक्रो नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इंट्राडे चार्ट्स आज मैं खोलने वाला भी नहीं हूँ, बिकॉज आई वेट फॉर मार्केट टू ओपन। सो दिस इज द रेंज फॉर द मार्केट। और आज का दिन है, इट विल बी अ ब्रेकआउट डे, विच मीन्स लेट्स सी वेदर इज ब्रेकिंग द रेंज ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। जस्ट फॉलो दिस। तो जो भी आपकी रेंज आ रही है, और प्लस आपको 20 और 50 डे में प्लॉट करके ही रखना मार्केट में। सो मैं प्लॉट कर देता हूँ, बिकॉज अगर वो क्रॉस कर जाता तो एक मार्केट में तेजी निकलेगी। अगर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज आइदर रेंज बाउंड और मैं डिप डाउन। ये हो गया आपका 50, और मैं डाल देता हूँ 20। और दोनों एकदम देखिए क्रॉसओवर है दोनों का। सो यहाँ दो लाइन आज आपको ड्रॉ करनी है। वन इज दिस क्रॉसओवर 20 एंड 50, अदर इज द लोअर एंड ऑफ द रेंज ओवर हियर एंड द हायर ऑफ द रेंज ओवर हियर। लास्ट 2 दिन का हाई सेम है। उसके बाद आप 5 मिनट 15 मिनट जो चार्ट्स पे आप ट्रेड करते हो चले जाओ। सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्रेकआउट डे। नाउ क्लियर? इंट्राडे लेवल्स में मार्क नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एन इवेंट डे आई एम कंसिडरिंग इट एज अ दिस थिंग। सो अभी एवरेज का काम हो गया, दैट मीन्स आई रिमूव द एवरेज। एवरीबडी क्लियर? सो दिस इज लास्ट 2 डेज हाई। मैं लिख भी देता हूँ आपको, ये सब चीज का ध्यान होना चाहिए आज के दिन। 2 डेज हाई है, 2 डेज हाई 2 डेज लो को मैचिंग हाई मैचिंग लो बोलते हैं। और ये जो लेवल है यहाँ पे हमारा 50 प्लस 20 डीएम है, जो कि एक अगर ब्रेकआउट आया तो मार्केट ट्राई करेगा यहाँ तक जाने का। आज जाए कल जाए आई डोंट नो, बट सेटअप है। तो ये हो गया आपके लेवल्स बेस्ड। प्लस एक चीज आप ध्यान रखो, मार्केट में ट्राइंगल बना है, किसी ने ऑब्जर्व किया? ट्रायंगल एक्टिविटी सजेस्ट करती है कि अभी मार्केट ब्रेकआउट के कगार पे है, ऊपर नीचे। अगेन आई सेड आई डोंट नो, वेट फॉर द हाइज टू गेट ब्रीच्ड। और अगर नीचे में आप लो, प्रतीक गेमर 193 post announcements is only you take a trade. Don't be in trade before that, you'll get stopped out. You don't know which side the spikes will come. So this is the triangle. So triangle को मैं extended line में बना देता हूँ। सो निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कल का पैटर्न देखो ना, और प्रीवियस डे हाई, तो ये पूरा ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब है, तो ये जो हाई है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई बन जा रहा है 23,500 के आसपास। वो टूटा तो एक स्पाइक्स ऑन द अपसाइड है। और नीचे में ट्रायंगल का लोअर लेवल है 23,360, ये टूटा तो फिर नरमी है। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेटअप फॉर द डे। एवरीबडी कॉपी दिस, गिव मी आइदर अ यस और अ नो। प्रतीक 10 बजे तक शांत रहो प्रतीक। आफ्टर दैट देखो मार्केट कौन से साइड डायरेक्शन ले रहा आफ्टर 10:15। बिकॉज देखिए प्रतीक, इवेंट डे है, आप और मैं इवेंट बता नहीं सकते। सो डन। सो नाउ विल गो टू बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में भी देखे तो सेम पैटर्न्स जैसा बन रहा है, अहेड ऑफ आरबीआई पॉलिसी। बैंक निफ्टी इज इन अ रेंज, which means that या बैंक निफ्टी में भी एवरेजेस है। दिस इज 20 एंड दिस इज 50। सो 20 और 50 दिन का एवरेज देखिए, बैंक निफ्टी कल के हाई पे ही है। सो विच मीन्स अभी कल कल का जो हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जा रहा है बैंक निफ्टी के लिए। 20 और 50 दिन का एवरेज अगर
ऊपर क्रॉस हो गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में कल का हाई और लो पे लाइन ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। बिकॉज इवेंट वाले दिन मार्केट इतनी छोटी रेंज में नहीं रह सकता, इट हैज टू गिव अ ब्रेक आइदर ऑन द आइदर डायरेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? इतना छोटा कैंडल में बैंक निफ्टी आज रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो बैंक निफ्टी इज मोर और लेस द रेंज ब्रेकआउट। Yes or no, friends? So this is last tool day 10, 20 or 50 DMA plus days high यहाँ पे। तो ये कल का हाई लो का रेंज है। ब्रेकआउट हैज टू बी देयर टुडे, यू कांट हैव एन बैंक निफ्टी विच इज इन वर्किंग टाइट रेंज। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखने जाओ तो एक ट्राइंगल है, अभी कौन से साइड ट्राइंगल टूटेगा वो बाउंड्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर टूटा तो अपसाइड ब्रेकआउट, नीचे टूटा तो डाउन साइड ब्रेकआउट, और ये लो ले लो ट्राइंगल, राइट? So this is how the triangle have shaped up in both the indices. Triangle भी indecision रहता, it's very clear। अगर event के पहले triangle है that means traders सब चुपचाप बैठे। and अगर मैं दोनों high भी ज्वाइन कर देता हूँ तो this is a perfect ascending triangle। और बाउंड्रीज आपको पता है, कल का हाई के ऊपर इज अपसाइड ब्रेकआउट, and if it breaks this trend line somewhere around 54,000 is going to be a downside breakout। Clear everybody? Give me either a yes or a no। सो संभल के काम करो, देख के काम करो, हड़बड़ाओ मत। सौदा है भी तो 10 के पहले निकल जाओ, या तो 10 सवा 10 बजे तक वेट करो। एंड लेट्स सी, see your trading is your trading, I don't interfere। We are just analyzing the chart from the study purpose, educational purpose। but be very very clear कि आज एक moves आने वाले, कौन से साइड मूव्स आएंगे आपके पास लेवल भी है। देखिए बहुत बार ऐसा आता है, एक ब्रेकआउट आता फिर जोर से नीचे भी हो जाता, तो आई हैव सीन मेनी टाइम्स इन इवेंट, एक बार ऐसे दे सकता है, फिर इट कैन हैपन लाइक दिस आल्सो। सो मेक श्योर quick in and out and with a stop loss should be your strategy for the day। So that's all from my side, friends। Thanks and have a nice day।